So hello everyone. Here is the new problem of the day, which name is minimum distance between two given nodes of a binary tree. GFG problem. GFG problem of the day. So let's read the problem statement. Given a binary tree with n nodes and two nodes value a and b, your task is to find the minimum distance between them. The given two nodes are guaranteed to be in binary tree and all nodes values are unique. Okay. So let's take an example first. So a equals to 2 and b equals to 3. So we have to find the distance between minimum distance between 2 and 3. So here the minimum distance between 2 and 3 is 2 because 1 and 2. So 2 will be the minimum distance. Let's take an example this. A equals to 77 and b equals to 22. So the minimum distance will be a equals to 77 means this and this. So we have to find the minimum distance between these two. So the minimum distance between this 1, 2, 3. 3 will be the minimum distance. So let's take an example for this and let's discuss about the approach for this also. So let's take this example. This example first, a equals to 22 and b equals to 77. The path will be 1, 2 and 3. Here we are starting from this point A and we are ending from this to this point B. So A and B के बीच में minimum distance कितनी होगी 1, 2 and 3. 3 will be the minimum distance. As same as A equals to 22, 20, 220 sorry, and B equals to 55. So the minimum distance between 1, 2, 3, 4, 5. 5 will be the minimum distance. Means हमने starting point दे रखा है and ending point दे रखा है. Then we have to find the minimum distance between the starting point to ending point. So here's the one thing is common, the lowest common ancestor. If you have done the problem on basic of binary tree, so then you know about what is lowest common ancestor. It means a common ancestor between the both points. If 22 and 77 दोनों का lowest common ancestor कौन है? Ancestor means बड़े लोग मीन्स उनसे ऊपर रूट्स बोल सकते हैं. तो 11 will be the ancestor which is lowest common ancestor. So let's do the code for this. So the approach will be like, firstly we will find the lowest common ancestor. If we have find the lowest common ancestor, if we know that the lowest common ancestor is 11, then we will go and we will check the height. Firstly we will check the height of a. The height of A is 1, and then we will check the height of B. Height of B is 1 and 2. 2 will be the height of B. Then height we will add height of A plus height of B. That will be my answer. 1 plus 2 equals to 3. As same as we'll find the lowest common ancestor which is 11. Then we'll find the distance means height of A. Height of A here will be the height of A will be 1, and here height of B will be 1, 2 and 3. 3 will be the height of B. So the addition of these two, 2 plus 3 equals to 5. So this was the intuition for this. So now let's write the code for this. So firstly what we will find is, we will find the lowest common ancestor which is ANC, which I am denoting as ANT, equals to new node star. So it's my advice to all of you that please create the tree like this. So it will be helpful to do the code. Yeah. So firstly, we have to find the lowest common ancestor. So node star ancestor equals to LCA, lowest common ancestor. In lowest common ancestor, I'll pass root comma A comma B. So now let's write the code for this. Node star lowest common ancestor. In lowest common ancestor, what I will pass is root. So node star root comma int A comma int B. So this we have done. Now we will write base cases for this. So what will be the base cases for this? If my root equals to null, if my root equals to null, if मेरी रूट ही अगर नल है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न नल कर सकता हूँ, क्योंकि रूट ही नहीं दे रखी तो क्या करोगे, उसको तो छोड़ो उसको. इफ रूट का डेटा इक्वल्स टू ए मीन्स इस रूट का डेटा ए के इक्वल है या
रूट का डेटा इक्वल टू बी के इक्वल है, देन इन बोथ ऑफ द केसेस वी विल रिटर्न रूट। ठीक है, नाउ वी विल ट्रेवर्स लेफ्ट एंड राइट, सो नोड स्टार लेफ्ट एलसीए means left common ancestor, so it will be equals to LCA of node, so root का left, sorry we are going in left side, so root का left comma a comma b as same as node star right right LCA equals to root का right, so here we have traversed the root left side and the right side. Now we'll check if left LCA equals to not equals to null, नॉट इक्वल टू नल, अगर लेफ्ट एलसीए नल नहीं है एंड मीन्स एंड सॉरी राइट एलसीए नॉट इक्वल टू नल, मतलब लेफ्ट वाला भी नल नहीं है और राइट वाला भी नहीं है, इन दिस केस वी विल रिटर्न रूट। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या अगर मेरा लेफ्ट वाला भी नल नहीं है और राइट वाला भी नहीं नल नहीं है तो मेरे पास दोनों है, तो मैं रूट उनका रूट है वो रिटर्न कर दूंगा। एल्स केस में क्या करेंगे कि मेरा इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी क्या ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरा ओनली लेफ्ट एल सी ए है तो रिटर्न लेफ्ट एल सी कर दूंगा मेरे पास, क्योंकि लेफ्ट एल सी ए पड़ा हुआ है। इन एल्सिफ केसेस like copy this and paste this, and if a right LCA exists, only right LCA exists, then return right LCA, and if in else case we will return null. So we have completed the LCA function. Now what I will do is I have to find the minimum height function also. So height function, how I can find is, so let's write the height function, बिकॉज एलसीए तो निकाल लिया मैंने, मीडियम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, अब उन मिनिमम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो आया है उनसे हम ए पर जाएंगे और बी पर जाएंगे, ए पर जाएंगे और हाइट स्टोर करा लेंगे, बी पर जाएंगे हाइट स्टोर करा लेंगे, दोनों का एडिशन जो होगा वो मेरे को फाइनल आंसर दे देगा। सो इंट, सो इसको लिखेंगे जैसे इंट h1 इक्वल टू हाइट ऑफ रूट कॉमा रूट नहीं यहाँ एंसेस्टर, बिकॉज एंसेस्टर पे चल रहे हैं कॉमा ए, and int h2 equals to height of ancestor comma b, ancestor को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ जो मिनिमम हाइट होगी मेरे को तो मिनिमम हाइट फाइंड करनी है, वैसे तो हम डायरेक्ट h1 प्लस h2 वहाँ पर मिनिमम कर लेंगे फंक्शन के अंदर, सो रिटर्न h1 प्लस h2, दिस विल बी माई आंसर। सो नाउ लेट्स राइट द फंक्शन फॉर height. So firstly what I'll do is I have an ancestor, now I have to go left and right side. So if I go left and right side, so I have to create a function for this. So let's write the function. This is an int its height. In height function I'll pass a root, which is not a root, which is the ancestor, and a common point x. We will use this x for a and b. So some base cases will be there. So what will be the base cases? If root equals to null, रूट इक्वल टू नल, अगर मेरा रूट नल है तो मैं मीन्स क्या रिटर्न करा सकता हूँ, 1e9 रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम, बिकॉज 1e9 प्लस 1 हम फाइनली 1e9 एडिशन करेंगे, तो 1e9 प्लस 1 करेंगे तो वो ओवर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इफ रूट का डेटा इक्वल टू एक्स, अगर ए रूट का डेटा मेरा एक्स के इक्वल हो जाता है तो मैं उस केस में रिटर्न जीरो करा दूंगा, और फिर रिटर्न जीरो क्यों करा रहा हूँ,
क्योंकि रिटर्न जीरो करा के वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नाउ मैं रिटर्न करा दूंगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ रूट के लेफ्ट में जाएंगे, कॉमा एक्स प्लस हाइट ऑफ प्लस, क्यों सॉरी प्लस नहीं, क्यों मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो हाइट ऑफ दिस, कॉमा रूट के राइट में, कॉमा एक्स। So this will be my final output. So this was the code. Let's run this code and see if this will work or not. So it is evaluated. It is taking so much time. So root a left. So what is the problem? 1 plus minimum of root ka left comma x and root ka left comma x. So what is the problem in this? Root e. Oh, root e कहाँ लिखा है मैंने? A. This was the problem. So now again let's compile this and see. So it is working perfect. Let's submit this. Yeah, it is working perfect. So this was the complete code. You can see this code. Firstly, what I have done is I find the lowest common ancestor. जब मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आ जाएगा, मीन्स लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है कि दोनों को जो जो ए एंड बी है ना, उनका दोनों का एक कॉमन रूट होता है, उसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। फिर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से हम ए पर जाएंगे और उसकी हाइट स्टोर करा लेंगे h1 में। फिर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से बी पर जाएंगे, हाइट स्टोर करा लेंगे h2 में, एंड h1 plus h2 will be my answer. So it is I have done this node star ancestor। ancestor की मीनिंग ऐसे होती है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। वैसे फर्क नहीं पड़ रहा पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आंसर लगेगा फिर वो, क्योंकि एंसेस्टर है। एंसेस्टर मैंने एंसेस्टर निकाल लिया यहाँ से एलसीए करके। एलसीए फंक्शन इज इजी, अगर मेरा रूट नल हो जाता है तो रिटर्न नल कर देंगे। अगर मेरे पास दोनों डेटा है तो रूट को रिटर्न कर देंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे, दिस वाज सम कंडीशंस। सो यहाँ से एल सी आ जाएगा। और हाइट इज सिंपल। हाइट कैसे फाइंड करते हैं? मिनिमम करते हैं 1 प्लस, बिकॉज 1 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि रूट वाला भी हम ऐड करते हैं। हम फंक्शन कॉल मान रहे हैं लेफ्ट के लिए राइट के लिए, तो लेफ्ट और राइट में से मिनिमम मेरे को डिस्टेंस दे देगा +1, क्योंकि रूट वाले को भी ऐड करना है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग 1 प्लस मिनिमम ऑफ दिस। So this was the complete solution. If you find this helpful, then please like, share and subscribe.